Students, here we have to find the angle of intersection of the given curve r is equal to a1 plus cos theta and r is equal to b1 minus cos theta. आप देख सकते हैं यहाँ पर टू गिवन कर्व है, r is equal to a1 plus cos theta and r is equal to b1 minus cos theta. हमको यहाँ पर इन दोनों कर्व के बीच का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है. इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट कर्व को डिफरेंशिएट करके dr बाई डी थीटा निकालेंगे. फिर फर्स्ट कर्व के लिए फाइबर की वैल्यू निकालेंगे, यानी एंगल बिटवीन द रेडियस वेक्टर एंड द टेंजेंट. Similarly, for the second curve we have to find dr by d theta, then we find phi 2 for the second curve, then we find angle of intersection. So first given curve is r is equal to a1 plus cos theta. आप देख सकते हैं यहाँ फर्स्ट गिवन कर्व है r is equal to a1 plus cos theta. Now we differentiate this with respect to theta. So we get dr by d theta is equal to a is constant here and differentiation of 1 is 0 and differentiation of cos theta is minus sin theta. So this is minus a sin theta. Now we find out reciprocal of this d theta by dr. This is minus 1 upon a sin theta. This is for the first curve d theta by dr. Now we find here tan phi 1 which is r d theta by dr of one curve. Here r is the value from the first given curve is a1 plus cos theta and d theta by dr is minus 1 upon a sin theta. So this minus is cancelled out and 1 plus cos theta is equal to 2 cos square theta by 2 and sin theta is equal to 2 sin theta by 2 multiplied by cos theta by 2. So this 2 is cancelled out, this square is cancelled by this cos and cos upon sin, this is minus cot theta by 2. So tan phi 1 is equal to minus cot theta by 2 here. And this minus cot theta by 2 can be written as tan 90 plus theta by 2 because we know that tan 90 plus theta is equal to minus cot theta. So from this we can write phi 1 is equal to pi by 2 plus theta by 2. आप देख सकते हैं यहाँ पर tan phi 1 को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला होता है r d theta by dr ऑफ फर्स्ट कर्व. r की वैल्यू गिवन कर्व फर्स्ट से a into 1 plus cos theta हो गई. d theta by dr की वैल्यू फर्स्ट कर्व के लिए minus 1 upon a sin theta, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से a कैंसिल हो जाएगा. 1 plus cos theta को 2 cos theta by 2 लिख सकते हैं. sin theta को 2 sin theta by 2 into cos theta by 2 लिखेंगे. अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल हो जाएगा. cos theta by 2 से स्क्वायर कैंसिल होगा. cos theta by 2 upon sin theta by 2, इसको cot theta by 2 लिख सकते हैं. तो माइनस cot theta by 2 को tan 90 plus theta by 2 लिख सकते हैं क्योंकि tan 90 plus theta माइनस cot theta होता है. तो यहाँ से tan phi 1 is equal to tan pi by 2 plus theta by 2, इसको phi 1 is equal to pi by 2 plus theta by 2 लिख सकते हैं. Now we taking second curve that is r is equal to b1 minus cos theta. Now we differentiate this and find dr by d theta. So dr by d theta is equal to b is constant here. Differentiation of 1 is 0 because 1 is constant and differentiation of cos theta is minus sin theta, so this is plus. So this is b sin theta. Now we find here d theta by dr for second curve. This is 1 upon b sin theta. And we know that tan phi 2 for second curve is r d theta by dr. Now we put value of r here and d theta by dr. So r is b times 1 minus cos theta and d theta by dr is 1 upon b sin theta. Now this b is cancelled from the numerator and denominator and 1 minus cos theta is written as 2 sin square theta by 2 and sin theta can be written as 2 sin theta by 2 multiplied by cos theta by 2. Now this 2 is cancelled by this 2 and this square is cancelled by this sin, though sin upon cos theta by 2, this can be written as tan theta by 2. So tan phi is equal to tan phi 2 is equal to tan theta by 2. So here we get phi 2 is equal to theta by 2. आप देख सकते हैं जो सेकेंड कर्व है वो r इक्वल टू b1 माइनस cos थीटा है. इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, तो b कांस्टेंट हो गया. 1 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 0 होगा. cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा होगा तो ये प्लस sin थीटा होगा.
अब dr by d थीटा का रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे तो इसको dr थीटा by dr लिखेंगे ऑफ सेकंड टर्म, दिस इज 1 अपॉन v sin थीटा। अब tan phi इक्वल टू r d थीटा by dr होता है, इसमें सेकंड टर्म से r की वैल्यू v टाइम्स 1 माइनस cos थीटा पुट की गई है, फिर d थीटा by dr की वैल्यू सेकंड टर्म से 1 अपॉन v sin थीटा पुट करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से v कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस cos थीटा को 2 sin स्क्वायर थीटा by 2 लिख सकते हैं, sin थीटा को 2 sin थीटा by 2 into cos थीटा by 2 लिखेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से 2 कैंसिल होगा, sin थीटा by 2 से स्क्वायर कैंसिल होगा, sin थीटा by 2 अपॉन cos थीटा by 2 इसको tan थीटा by 2 लिखेंगे। अब tan phi 2 इक्वल टू tan थीटा by 2 है, तो phi 2 की वैल्यू थीटा by 2 होगी। Now we find out angle of intersection of the given curve 1 and 2. So angle of intersection of given curve, angle of intersection of given curve is equal to phi 1 minus phi 2. So phi 1 is pi by 2 plus theta by 2 minus phi 2 is theta by 2. So this phi 2 is cancelled by this one, so we get pi by 2. So here the angle of intersection of given curve is pi by 2. This shows that both the curve 1 and 2 intersect orthogonally. This shows that both given curves 1 and 2 intersect orthogonally. Thank you.